Hi there. हम लोग बहुत आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे काम हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और बहुत पोस्ट एंड आर्ट वर्क्स और बहुत कुछ मिलता है। आर्ट वर्क इज़ वेरी लेजिट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्ट वर्क्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अदर स्टेटसेस एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स that everybody is posting about mental health awareness and acts and listening and talking and all of that. But the thing is that I want to go in depth today about it, being a survivor of sexual, emotional, and physical abuse for 20 years, my whole entire childhood. And I think it's time that I have to be very brutal and very unfiltered or very open about a lot of facts today, which I don't mention in my vlogs mostly. If you are new to my channel, my name is Mehrina Hashmi and I'm a curator by profession. I talk about mental health and I'm a survivor of abuse for my entire childhood, and I share my survival and healing journey on my channel. So if you are new and if you can watch it, if you're going through mental health problems or abuse, of any kind, please do subscribe. Or otherwise, if you want to help others, please do subscribe to my channel or just subscribe to my channel, and I post every week. There are other videos also about my projects as well on my channel. This is on alternate weeks. So about that, I want to give a clear picture of all of that, because coming from a long and painful background of social acceptance and struggles as well, because मेरे साथ बहुत कुछ अनफेयर भी होता है कि बहुत सारे लोग आपको वैसे तो जो है बहुत कुछ पोस्ट कर रहे होते हैं. Like, I mean, people do a lot of things which can trigger or exaggerate the symptoms. एक तो ये जो हमने हर चीज को डिप्रेशन का टाइटल दे दिया ना, डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन. Mental health is not about depression only. There is there is schizophrenia, there is bipolar, there is anxiety, there is a lot of things. There's a long list. It's just not that कि आपको stress हुआ and you are worried for 2-3 days and then it's a depression. Depression goes for about depression, it goes for months. It doesn't end up in couple of days or a week. It's like a whole, it takes its own time. That's what I meant to say. I do not have depression, right? I do not have a stress management. If you find my work online, I'm very well organized and very good with my work also. I've received couple of awards also. I had a show recently this week opening with 52 artists in Nepal for my work and my justification. अगर मुझे डिप्रेशन होता तो मैं इतना कुछ भी नहीं कर सकती थी, कुछ फंक्शन भी नहीं कर सकती थी. अगर मुझसे स्ट्रेस मैनेज नहीं होता, ठीक है, आई मीन अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो आई डोंट थिंक आई कुड हैव डन a lot of projects or a lot of ventures and being a social entrepreneur at the same time. Or could I? No, I could not, because I was talking, I'm a social motivational speaker, and I was talking about my journey and an event, and there was one person, she started with the stress management. भाई बात तो सुन लो कि बंदी क्या रही है. I mean, these things frustrate you so much because it's been 10 years that I am working on that. In my justification, I have been displaying internationally in Europe for several projects. You can find reviews about my work in international newspapers, and I'm not bragging, I'm justifying my work about, which is narrating my emotional ordeal, that what was I going through, because I was completely alone. I'm going to tell you कि किस तरह के लोगों ने मुझे बातें कही हैं और क्या मुझे फेस करना पड़ा है when I was going through this. This is very recent that I can openly talk about it, and it's a catharsis for me, because this is the only way out. I have close friends, but I don't have a best friend. Why? Because I don't have this privilege of picking a phone call and be a weak person. I have to look for people. I have to request for people. And how is this fair? It's not that I'm not a friendly person in personal life. I'm a very friendly person. I'm a very funny person also. I'm fun to be around, but the way people perceive you for your for your personal life or whatever your struggles are, or being an alone girl, or speaking up about abuse in journal, it's very different, and it's very difficult. I mean, for example, there was this one person, I talked to him and I'm very open about it. It's like leave it or take it, or go
fuck yourself kind of a situation. Because जब आप इतना कुछ आपके साथ हो चुका होता है ना कि आपने सोशली, फाइनेंशियली, इमोशनली आपने काम भी जस्टिफाई कर लिया, उसमें भी आपके साथ पॉलिटिक्स है, स्टैब्लिशमेंट के साथ वो अलग आपको बुली कर रहे हैं, आपके टीचर्स आप स्टडी कर रहे हैं, आप पे कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, सम ऑफ द टीचर्स वर बुलिंग मी, सम ऑफ देम वर सपोर्टिंग मी, बट इट वाज एडिंग टू माय मिजरी. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स आपके साथ, आपके घर में अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में कोई इंतकाल हो जाए तो आपको ताजियत मिलती होगी ना, हग मिलता होगा कि भाई आई एम सॉरी, पीपल सपोर्ट यू. मेरे तकरीबन I can say I have talked about it in so many videos also and I'm still processing it. जब मेरे घर में कोई मरा था तो मुझे कहा गया था तुम्हें तो खुश होना चाहिए. मुझे आज तक इस पूरे I'm going to be 35 in August and living in this after I was 24 since 2008. Yes, they were miracles, they were good friends also, but help came, but we were not friends. Like मैं एक connection की बात कर रही हूँ जो कि एक ह्यूमन नीड होती है. मैं भी इंसान हूँ और मेरी भी वही ज़रूरतें हैं जो सबकी होती हैं, जो फैमिली के साथ होती हैं. मुझे कहा गया कि तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि वो अच्छा इंसान तुम्हारे साथ नहीं था. मगर आप कैसे किसी के मरने पर खुश हो सकते हैं भाई? अगर कुछ और एक दफ़ा और हुआ, आप एक तो बता भी नहीं सकते किसी को. यहाँ पे मुझे ये तक आ गया वी आर ऑल अलोन एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम मेच्योर वुमेन इन देयर 40s, राइट? ये नहीं कहा गया कि ओ आई एम सो सॉरी, और पीपल डिड ऑफर हेल्प के यू कैन कम एंड टॉक अबाउट इट. बट जब आपके साथ इतना कुछ गलत हो रहा हो ना तो फिर आप बात कहने से भी डर जाते हैं. और एक तो ये जो हम लोग एडवाइस देते रहते हैं ना हर चीज़ पे कि मूव ऑन कर लो मेरी, मूव ऑन कर लो. मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं रात को सो नहीं सकूं, or if I have triggers of height phobias because of a lot of incidents. By the way, I'm writing all the incidents in a book using this time. It will be published soon. I'm working hard on it. But the thing is कि ये मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है ना? जब आप when you are born and raised in a household where you're not safe, जो आपके caretakers हैं वही आपके predators and then what they are they are preying on you, they are abusing you. तो आपका एक डायनेमिक सिस्टम शुरू हो जाता है. फिर जब आप पाकिस्तान में घर से बाहर निकलते हैं, कराची जैसे शहर में, तो बहुत सारे लोग, मर्द, औरतें, they are in bad marriages. Men I have seen are in bad households. They cannot stand up for themselves. They are suffering immensely because क्योंकि हमारे पास कोई आउटलेट नहीं है. एक तो आप वो सब कुछ उसको आप झेलें, फिर उसके बाद आप बाहर जाएं तो आपके पास पार्ट टाइम जॉब्स नहीं है. I had a hard time looking for a house or a place with peace. I am so glad that I have it now after 12 years. You have to go through it. Landladies जो आपके deposit नहीं देती हैं, bully करती रहती हैं. My last landlady refused to paint the house for 5 years. Like I had to take the dabba and do it, and I was paying a hefty amount, and that was and हर वक्त ये threat था कि मैं तुम्हें निकाल दूंगी. I mean this happens. डिपॉजिट नहीं मिलता आपको, आप बस बिल्स पे करते रहे, आपको बहुत सारी चीजें रिटर्न भी नहीं मिलती हैं. यहाँ पे लोग एक घर में रहते हैं, आदमी होते हैं और उनके बहुत सारे काम नहीं होते. सो यू कैन इमेजिन बीइंग अ 24 years old girl विद नो प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंसेस, और नहीं पता था कि कैसे रहना है और क्या करना है. और इस कराची जैसे शहर में जहाँ पे बिल्कुल भी कॉमन नहीं है. दिस इज नॉट न्यूयॉर्क दैट यू गो आउट एंड क्रैश ऑन फ्रेंड्स प्लेस. आई डिड दैट ऑल्सो. मिरेकल हैपेंस एवरीवेयर, बट it was very difficult. It was so difficult that I can't explain in words. और उसके बाद जो social आपकी struggles आती है ना, मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे भी कोई बहुत सारे friends हो. I have a lot of friends social circle, but I know that they are there for my work. I have to have certain boundaries, certain limitations of those relationships, because with men, you can't trust them. Everybody out there is sexually frustrated. We all know about it. We don't talk about it. ठीक है ना? और अकेली लड़की तो उनको माले गनीमत नजर आती है. उनको लगता है कि ओके यहाँ पे तो कोई बाउंड्री नहीं है, कोई भाई की और बाप की और कोई बड़ा सॉलिड जो है ये क्या कर लेगी. And I had to deal with situations in my life. I deal with it. I don't need advice. Don't give me your fucking advice. I'm telling you right now. Don't comment on it with an advice if you can't say good words. Because मुझ जैसी बहुत ज़्यादा लड़कियाँ ये सब कुछ करती हैं. हम लोग रोज डील करते हैं इन सारी चीज़ों से. लड़के भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं. इट्स नॉट अबाउट एडवाइस कि ये नहीं पहनो, वो नहीं करो. आई डील विद इट. इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ. आई एम जस्ट शेयरिंग द consequences for all those people
out there who are going through it with mental health and abuse and a lot of harassments. I'm talking for them. Okay, so if you cannot understand it, हम वैसे तो बात कर रहे होते हैं, मगर कोई जो ओपनली कह रहे होते कि यार तुम्हें ऐसे करना चाहिए, उधर नहीं जाया करो, उससे दोस्ती नहीं करो, तो क्या मतलब आप घर पे बैठ के बिल्कुल आप काम कर सकते हैं? Can you make money? Can you, if you don't have a network, I have to talk to people, I have to deal with them, I have to make a boundary with my body language, with my words, I have a certain way of behaving in front of them. I do that on everyday basis. And every other girl working outside or supporting their family is also doing that. ठीक है ना? So you have to accept this reality. पॉजिटिव पाकिस्तान चाहिए, तो जब तक हम लोग रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो हमारे पास कुछ भी बेहतर नहीं होने वाला. हम लोग जब तक खुद से नहीं, I share all these details more on my Instagram. You can follow Mehreen Hashmi _MH. You can easily find me on Facebook also. So there was this incident. Someone who was a chartered accountant, very social, very open-minded, and kind of what can I say, groom person. That person made fun of me of when I had a nervous breakdown, and it wasn't a suicide attempt, but there are different stages of healing also. So sometimes you are not in control of your taking care of yourself, and when I am doing it by myself, I don't remember कि मेरा car accident हुआ, मैं अकेली थी, मुझे एक दफा ER जाना था, I collapsed at home. I had to literally wait for an assistant who I hired, who was doing an internship with me, to come and take me to the hospital. My friends knew. Nobody bothered. Nobody asked. I was sitting in the car in a hospital, just, after a car accident. And then two friends knew. Nobody asked me, कि तुम अकेली हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, do you have anyone? And the other person was just sleeping. This person woke up around 3, and they wanted to come to my place at, they wanted me to host them or whatsoever. And I said, no, this is not happening. And फिर उसके बाद एक बहुत courtesy होती है. I thought कि friends शायद ऐसे ही होते हैं, or it's a huge thing to ask for it. But I was doing all these favors क्योंकि ठीक है, ये हम सब जानते हैं कि लोग यहाँ पे एक दूसरे को कितना यूज करते हैं. I've been asked to do proposals for a friend's office work while I have to run my own company, do my projects, and make those things. Of course, I put a price tag on everything now, and now they don't want to do it. हम लोग सब एक दूसरे को यूज कर रहे होते हैं. There is a majority of people who wants you to do their work, or they don't do their work, or they think यार ये क्या करेगी, तो इसको तो ना हम खूब तंग करते हैं. नो, ये होता है, सबके साथ होता है कि एसी वाले को भी आप 36 दफा कॉल करें तो वो आता है, वरना नहीं आता. इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, सबके आप जो है वो इंतजार करते रहे, नहीं आता. Whatsoever, these are the realities. And I'm not going to sugarcoat all of these. It's in this. So अब जो है, अब क्या हुआ है कि अब मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है ना. तो एवरीबडी इज शेयरिंग अ पोस्ट अबाउट मेंटल हेल्थ दे कैन टॉक टू. आई हैव नोन दीज पीपल जिनसे मैंने थोड़ी सी एक हिंट देते ना कि शायद आप इस बंदे के दोस्त बन सकते हैं. बिकॉज व्हेन यू डोंट हैव अ फैमिली, it's a human need to have human connection. Being a human being, I had that need, but no, I am not looking for being friends. वो जो spam पे अक्सर जो messages आते रहते हैं ना, उनसे मैं बहुत अच्छे से निपटती हूँ और बहुत अच्छे से निपटना जानती हूँ, ठीक है ना. सो यू कैन नॉट, अगर एक बंदी यहाँ तक पहुँच सकती है और यहाँ पे बैठ के बता सकती है, तो वो फिर और भी बहुत कुछ कर सकती है. तो वो जो आवाम है जो अंडर एस्टिमेट करती है खवातीन को, वो मैसेज करने की जरूरत ना करे तो बेहतर होगा, ठीक है ना. आई एम ऑन दैट स्टेज वेयर आई डोंट हैव एनी फियर. जब आप बहुत सारी चीज़ों से गुजरते रहते हैं और आप जब आपको एक टाइम भी नहीं मिलता इस ब्रेक का, दैट यू कैन नॉट, डोंट हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन. द डे आई हैव दिस ब्रेक फ्रॉम दिस tiring life, that okay, today I can be a weak person, and I pick my collar, okay, someone died and I want to cry on a shoulder, or this happened to me, I want to cry on your shoulder, or I had a car accident, I want to cry on your shoulder, or I am not told to be, we are all alone, or you have to be strong, you're a very strong person, all of that bullshit literally. Then I will understand that yes, वाकई what you were doing. So जिस दिन मुझे वो देखने को मिलेगा ना, मैं समझूंगी वाकई उस पर काम हो रहा है. कि स्टेटस पोस्ट कर देने से कोई आपका फर्ज पूरा नहीं हो जाता, unless you mean it and you are doing it in your life also. I have known people जो कि कंपेयर करना शुरू कर देते थे.
एडवाइस करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई पहले सुन तो लो, बंदा क्या गुजर क्या रहा है। एक बंदी बिल्कुल अकेली है, शी डजंट हैव एनी आउटलेट, एंड दैट्स यू आर डूइंग, यू कांट इवन लिसन, you know, and then you want to be her friend and ask her to call, I mean, you, her friend. What are friends for? I still don't understand. Yes, I have followers, supporters, social networks. I have a lot of people that I adore. I have a lot of support that in my work. I'm being grateful, but I'm talking about the masses. I'm talking about the personal human need here. हम लोग जो gossip करते हैं, you know, this person, no family or whatsoever. और यू नो ये तो डिवोर्स है, और ये तुम्हें पता है इस आदमी की तो 2 शादियां हो चुकी हैं। ऑल ऑफ दैट हमने कभी ये सोचा है कि इस वजह से उस बंदे पे क्या असर पड़ रहा है जो कि ऑलरेडी उस चीज को लिए गो थ्रू कर रहा है? हमने कभी ये सोचा है कि उस बंदे पे क्या गुजरती होगी? मैंने पढ़े लिखे तरीन लोगों को ये कहते सुना है मुझसे मुझसे मेरे पास आके कि जी नो, सेंसिबल मेन ऑल्सो इंक्लूडिंग women as well, you are so lucky to be alone. You think it's lucky to be alone, for not being pampered, for not being cared for. I cannot stop working because I have to sustain my living in this country. मैं गरीब रह के नहीं रह सकती. I have to have a certain lifestyle to stay here and talk about it. I have to make certain kind of money. It's a very brutal fact about this life, in this country, in this city, to have a certain kind of life. अगर मेरे पास काम नहीं होता, रिस्पेक्ट नहीं होती, तो आप लोग सुन रहे होते? कोई भी नहीं सुन रहा होता. I have seen that work when I was struggling. People judged me, looked at me, they saw me, gave me awkward looks. I had this one friend before I opened up, and I wanted to open up because वो एक आपका एक अंदर भर जाता है. You need to say it out loud that this has happened to you, and for your whole life, my whole entire life since I've remembered in this world. And after that I was struggling outside, out of that, to sustain a life and have some respect or whatsoever as a girl, or with my story. So there was, you can see कि कहाँ पे कोई break आया. ठीक है, I've traveled and I have all those privileges and everything. I'm grateful for that. But I'm talking about, consider my human need, right? बहुत सारे लोग जो मुझे आके कहते हैं ना, you are so lucky to be alone, वो लोग शुक्र क्यों नहीं करते कि उनके पास उनके चाहने वाले हैं? वो ये शुक्र क्यों नहीं करते कि जब वो बच्चे थे तो उनको प्रोटेक्ट भी किया गया, उनको प्रोवाइड भी किया गया, उनकी केयर भी की गई, ताकि वो आगे एंड देन आगे जाके एक नॉर्मल लाइफ गुजार सके. और वो एक नॉर्मल लाइफ भी गुजार रहे हैं. दे हैव अ फैमिली एज वेल. I am accepted for my work. I am not socially accepted. If I cannot get a condolence or say that, you know, मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मैं बीमार हूँ or I need something or whatsoever, कोई कॉल भी कर लेता है तो वो भी बहुत आपके लिए बेहतर होता है. I had friends जिनके लिए, I mean, you know, you doing everything for them, all the work, so they love you back. But what they do is, you have anxiety, you are alone, you have high fever. There was this one friend and I said, 3rd day of high fever, I literally begged this friend who stayed at my place literally 24/7 और weekends पे, मतलब you know, जो रात को घर जाते थे सारा दिन गुजार के सारे आपसे सारे काम करवा के, and this person said, तुम खुद चली जाओ. And I said, I have very high fever, I really need to go to the hospital, I cannot go in this condition, I cannot drive in this way, and मैं कैसे जाऊँ? And I'm scared to go to the hospital also because, you know, safety reasons. आप कहीं लड़की तो कहीं में भी सेफ नहीं होती. एक बंदी तेज बुखार में हॉस्पिटल आ रही है, उसके साथ क्या क्या हो सकता है, right? And I didn't have that help. Most of the time I took a Uber and had to go to the hospital. एक दफा तो मैं एंटी एलर्जी के 2 शॉट्स लगवा के आई थी. उस वक्त भी लोगों को पता था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ. इनफैक्ट मुझे फेसबुक पे जो है, आउट ऑफ कंसर्न, I had to post a status about it that अगर कुछ हो जाए तो शायद लोग लाश ही ठिकाने लगा दें. आपको तो ये भी नहीं पता कि आपको दफन कौन करेगा. I don't think कि इस मुल्क में या इस इंसानियत में ऐसे लोग भी हैं जो आपकी दफन भी कर दे रहे हैं. किसी ने मुझे कहा कि you know, ईद ही कर देता है, या ईद ही कर देता है. So this is the reality of this country is, जो हर वक्त एक स्टेटस लगा रही होती है ना, हर दूसरे दिन हम देख रहे होते हैं about mental health. हम भी काम कर रहे हैं, हम भी कुछ बहुत अच्छा काम भी हो रहा है. I know a lot of sensible and sensitive people who are really working hard and with sensibility. I have been to counseling for 3 years, for every week, that kind of counseling, and I prefer professional help, not just like kind of amateur help. There are people, there are triggers, there are patterns, there are a lot of things, and everything is, for God's sake, it's not depression. Understand the sensitivity of this
टॉपिक एंड देन टॉक अबाउट इट, क्योंकि वो जो आप बहुत कुछ उसके साथ इनफैक्ट जो काम होते हैं ना उसके साथ ट्रिगर वार्निंग भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप ओपनली सुसाइड की बात कर रहे हैं या सेक्सुअल अब्यूज की बात कर रहे हैं या किसी चीज की भी बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे मुआशरे में रोज हमें खबरें मिलती हैं रेप की, बहुत सारे बच्चे, मर्द, औरतें, बच्चे, babies, they are getting raped on daily basis. So you know, when they see it, it triggers your trauma. You have to understand in depth with compassion, not because it's a hot topic happening right now तो आपने भी उसको पोस्ट कर दिया। और आप अगर चुप करके किसी की बात नहीं सुन सकते, किसी को कंधा नहीं दे सकते, नहीं समझ सकते, तो आप ऑफर भी ना करें, ठीक है ना। आपको जरूरत नहीं है डॉक्टर बनने की या काउंसलर बनने की। जब आपको फ्लू जैसे होता है ना कि हर चीज, फ्लू, बुखार एक रेगुलर बीमारी, डिप्रेशन मेंटल हेल्थ का टाइटल है हमारे लिए, तो जिस तरह से वो होता है ना कि हर चीज को हम लोग दवा खा लो बुखार ठीक हो जाएगा, हम वैसे ही इसी तरह को डील कर रहे हैं। दिस इज वेरी डिफिकल्ट, दिस इज वेरी डिफरेंट, इट्स नॉट समथिंग टू बी मॉक्ड और यू नो जस्ट डील विद इट कैजुअली। यू कैंट डू दैट। अगर आप किसी बड़ी बीमारी का इलाज, हार्ट डिजीज का इलाज नहीं कर सकते तो आप इसका भी इलाज नहीं कर सकते। पहला स्टेप ये होगा कि आप शायद पैनिक अटैक्स को समझ लें या फिर इस चीज को समझ लें कि वो बंदा क्या गो थ्रू करता है जो कि इस चीज को सफर करता है। आई पोस्ट a lot of breakdowns of my daily life of mindful routine because that was the only thing that has helped me with my sleep patterns, my insomnia, my nightmares, my traumas, my triggers, everything. I also have physical anxiety that's painful, and if I don't work out I cannot function. So if someone is saying that because आपको एक अच्छी पिक्चर सोशल मीडिया पे नजर आ रही है तो लोग उस पर भी यकीन नहीं करते, पीछे की स्ट्रगल्स क्या है। सबके साथ प्रॉब्लम है, पर एक बंदी जो अकेली रहती है, जो सब कुछ सफर करती है ना, उसके साथ मसले नहीं हो सकते। हम लोग तो ये समझते हैं ना कि आपके साथ फैमिली है, आपके साथ टैग लगा हुआ है खानदान का सब कुछ, तो आपके साथ मसले आपके असल है। वरना एक बंदी जो सब कुछ अकेले कर रही है और बहुत ज्यादा कर रही है और सोशली भी एक्सेप्टेड नहीं है, जिसको कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलती, उसकी प्रॉब्लम बुलशिट है। उसको क्या मसला होगा? उसको ना घर में प्लम्बर चाहिए, ना इलेक्ट्रिशियन चाहिए, ना गाड़ी के लिए मैकेनिक चाहिए, ना उसको बिल्स पे करने, ना उसको सेफ्टी का इशू है, ना उसको कुछ डील नहीं करना, वो सिर्फ जो है ना खेल रही है। That's the thing I have to go through. It's like a war zone and it's fucking tiring, let me tell you that. If you are watching my channel, thank you so much, and I don't mean any offense. I am just telling everything, all the realities in front of you. I'm spreading it in front of you without considering the consequences. मुझे पता है कि इसके बाद I don't care कि इसके बाद क्या होता है. So take care of yourself. Those who are really suffering, take care of yourself and be careful with your triggers and all of those patterns, and do take professional help or you know someone who can listen to you or what, however you need it. अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा. Much love.